I want to speak today to the unfolding situation in Afghanistan, the developments that have taken place in the last week, and the steps we're taking to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan and moving quickly to execute the plans we had put in place to respond to every constituency, including and contingency, including the rapid collapse we're seeing now. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking, but I want to remind everyone मैं इस बारे में बताऊंगा कि अब अमेरिका और अगले क्या कदम उठाने वाला है in Afghanistan. अफगानिस्तान में जो हो रहा है उस पर मैं बताऊंगा हम आगे क्या करने वाले हैं. With clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base 20 साल पहले from जब which to attack us 9/11 हुआ, again. जब अमेरिका ने एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी, तो हमने ये तय किया और हमने इंश्योर किया कि अल-कायदा का पूरी तरह से खात्मा किया जाए. हमने ओसामा बिन लादेन को खोजने की कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और हमने ये करके दिखाया. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan में कभी ये लोगों को भरोसा नहीं था कि वहां पर एक डेमोक्रेसी आएगी. Preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counter-terrorism, not counter-insurgency or nation building. और हमारा फोकस अब काउंटर टेररिज्म पर होना चाहिए, ना कि इसलिए कि दूसरे देशों में काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर क्या हालात हैं. And that's why, as president, I'm adamant we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. और इसलिए आज एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये एडमिट करता हूं कि आज हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे सामने आज क्या से चैलेंज है, बल्कि इस बात पर नहीं कि हमारे सामने कल कौन से चैलेंजेस थे, कौन से हमारे सामने खतरे थे. ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq and establishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia. These threats warrant our attention and our resources. We conduct effective counterterrorism missions. हमारे सामने सीरिया और इराक से भी खतरा था और हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं और हम काउंटर टेररिज्म पर अपना पूरा फोकस किए हुए हैं. बजाय वहां पर जाने के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस थ्रेट को ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करें. Over the horizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on the direct threats to the United States in the region and act quickly and decisively if needed. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. जब मैं ऑफिस में आया, जब मैंने राष्ट्रपति का पद संभाला, तब मैंने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान के साथ कुछ समझौता किया. 2021, just a little over 3 months after I took office. U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 American forces to 2,500 troops in country. जब मैंने ऑफिस संभाला तब तक अमेरिका की फोर्सेस जो लगभग 15,500 थी, वो घटाकर 2,500 तक कर दी गई अफगानिस्तान में. I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There would have been no ceasefire after May 1. देखिए, उसके बाद जब मैं आया तो मैंने ये कोशिश की कि तालिबान से किसी तरह का समझौता ना हो, तालिबान से किसी तरह की बातचीत ना हो, और वहां पर मई 2021 की जो तारीख रखी गई थी उसको घटा के मैंने उस चीज को आगे बढ़ाया ताकि मैं जो वहां पर पॉसिबिलिटीज थी कि अमेरिका के खिलाफ या अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ चीजें जा सकती हैं, उनको कम से कम किया जाए. Lurching into the third decade of conflict. हम नहीं चाहते थे कि हम एक और दशक वहां पर तालिबान से लड़ते हुए गुजारें. हम नहीं चाहते थे कि हम एक और तीसरा दशक हम वहां अफगानिस्तान में लड़े तालिबान से. इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब तालिबान से लड़ने का टाइम नहीं है, ये अफगान लोगों को तय करना है और हमें वहां से बाहर आना चाहिए. I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up
and और fled the देखिए country. हमने जो तय किया था या हमने जो अंदाजा लगाया था उससे कहीं पहले चीजें हुई, लेकिन आखिर हुआ क्या? दरअसल अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने वहां पर अपने इरादे, मजबूत इरादे नहीं दिखाए। Was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. और हमें अफगान फोर्सेस अगर वहां पर तालिबान से नहीं लड़ पा रही हैं तो ना तो हमें वहां पर हम लड़ सकते हैं हमेशा के लिए एक जंग, और ना ही हमें वो जंग लड़नी चाहिए अगर अफगान फोर्सेस वो जंग नहीं लड़ पा रही हैं तो। Incredibly well equipped. A force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool हमने उस फोर्स को तैयार किया, हमने उनको ट्रेनिंग दी, वो संख्या में भी ज्यादा थे, हमने उनको हर कुछ दिया, हमने उस फोर्स को हथियार दिए, हमने उनको एयर फोर्स दी। तालिबान के पास एयर फोर्स की कोई ताकत नहीं थी, जबकि अफगान फोर्सेस के पास थी। We could not provide them was the will to fight for that future. हम जो उनको नहीं दे सके वो थी वो इच्छा शक्ति जो उनके अंदर होनी चाहिए थी तालिबान से लड़ने की, अपने देश अपनी जमीन के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति जो अफगान फोर्सेस में नहीं थी। Any real resistance of the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. और इस बात की कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं दिख रही थी या कोई संभावना नहीं दिख रही थी, चाहे 1 साल और 5 साल और या 20 साल और अमेरिका की फोर्सेस वहां पर होती तो भी कोई बदलाव आता, अगर अफगानिस्तान की फोर्सेस सामने नहीं आती तो। अफगानिस्तान की फोर्सेस वो विल पावर नहीं दिखाती तो। were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down. They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them. यहाँ पर नेगोशिएशन अफगानिस्तान के लोगों को करनी थी, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को करनी थी। अमेरिका के लोग हमेशा के लिए उस देश के लिए जंग नहीं लड़ सकते जिस देश में वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके लिए बात नहीं कर पा रही हो, उनकी आवाज ना उठा पा रही हो। When I hosted President Ghani and Chairman Abdullah at the White House in June, and again when I spoke by phone to Ghani in July, we had very frank conversations. We talked about how Afghanistan should prepare to fight their जब मैं प्रेसिडेंट गनी से व्हाइट हाउस में मिला जून में, उसके बाद जब जुलाई में भी मिला तो मैंने उनसे सीधी बातचीत की कि कैसे अफगानिस्तान की सरकार तैयार है तालिबान से लड़ने के लिए, कैसे अफगानिस्तान की सरकार अपने देश में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तैयार है। They failed to do any of that. वो हर मोर्चे पर फेल साबित हुए। In diplomacy to seek a political settlement with the Taliban. वो डिप्लोमेसी में भी फेल हुए, वो तालिबान के साथ एक शांतिपूर्वक समझौता करने में भी फेल साबित हुए। The Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. हमने लगा था कि अफगान फोर्सेस लड़ेंगी, लेकिन शायद हम गलत थे। Those who argue that we should stay. How many more generations of America's daughters and sons? हालांकि कुछ लोग इस पर अभी भी ये बहस कर सकते हैं कि हमें वहां पर रुकना चाहिए था, लेकिन कितनी पीढ़ियों को हम इस जंग में झोंक दें? Afghan troops will not. How many more lives, American lives, is it worth? हम कितनी How many endless rows of headstones जानों को Arlington National Cemetery? यहाँ पर I'm clear on my answer. अमेरिकन को इस जंग में झोंक दें, कितनी जानों को और यहाँ पर जाने दें? We've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. ये जंग of doubling down बिल्कुल भी अमेरिका के हित में नहीं है। Of attempting to remake a country through the endless military deployments of U.S. forces. Those are the mistakes we cannot continue to repeat. Because we have significant vital interest in the world. सैनिकों को दूसरे देशों में इस तरह की जंग के लिए तैनात करते रहेंगे। अमेरिका हमेशा के लिए इस बोझ को नहीं सह सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।